in my YouTube channel Account Expert. I am Santosh Misra, and today we will learn the topic double entry system, which is the seventh chapter of your book. Dear student, we have already covered the sixth chapter accounting equation, and in beginning of the course I already discussed who discovered the double entry system, but today I will revise the concept. Double entry system was discovered by Francisco Luca Pacioli, who was the resident of Venice city of Italy in 1494. He wrote a book. He was a great mathematician, and he wrote a book, De Computis of Scriptures. This book was written in Italy, so the language was not English, and he was a mathematician, so he discovered a certain rule. On the basis of that rule, today we always record our transaction. So in double entry system, Luca Pacioli says that every business transaction has twofold effect. Every business transaction has twofold effect, and that it affects two accounts in opposite direction. And if a complete record to be made of each such transaction, it would necessary to debit one account and credit another, and it is the recording of twofold effect of every business transaction, and you also know that we always record only the monetary transaction, and that have given rise to the term double entry system. तो जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन, हम उन्हीं की रिकॉर्डिंग करते हैं. तो ये इन्होंने बताया, ये जे.आर. बार्टली बॉय का ये डेफिनेशन था, ये बहुत ही, इट इज वेरी फेमस definition given by J.R. Bartley Boy. So student, double entry system, in double entry system we record every transaction has two effect, and every transaction affected the two accounts. In journal entry, by using the double entry system, we record one transaction, one account as debit and other account as credit. तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट जो है, कोई भी ट्रांजैक्शन दो पक्षों को प्रभावित करता है, और दो पक्षों को प्रभावित करता है, एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक रूल्स, एंड दैट रूल्स आर कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. तो डबल एंट्री सिस्टम चूंकि इटालियन लैंग्वेज में थी, तो इसको फिर बाद में यू ओल्ड कैसल ने इसको क्या किया कि बाद में ये इंग्लिश में उसका कन्वर्जन किया, और फिर ये पूरे यूरोप में फैल गई, और आजकल हम लोग इसी अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करते हैं. तो डबल एंट्री सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम, वी ऑलरेडी कवर द अमेरिकन सिस्टम, एंड अमेरिकन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम. एंड बाद में ये पूरे इंग्लैंड में, यूरोप में चारों तरफ फैल गया. तो जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश कन्वर्जन जो हुआ था इटली में बनाया उसने, और उसका बस केवल इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया गया ब्रिटेन में, तो हम लोग इसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जानते हैं. सोचिए ब्रिटिश जो है कैसे थे. अब देखिए,
principle or some principle are behind this concept, this system. First is every transaction affect two account. Every transaction affect two account. Suppose that Ram started a business with cash. Ram started a business with cash. Then cash is coming in the business, and also business has a liability term as capital. So capital will increase and also cash will increase. Both are increasing, and so that every business transaction have two. Every transaction affect two accounts. Now, in second point, regarding of both personal and impersonal aspect means it cannot be said that only personal account, recording of only personal account can be maintained in the double entry system. Personal, nominal, personal and impersonal. Impersonal account have also two types, real and nominal. Then we always regard the both personal and impersonal aspect. Now we will cover the after this concept what is the types of account, and at that time I will definitely cover that concept. So student, look at this. According to certain specific rule, personal account has some different rule, real account has some different rule, and nominal account has also different rule. So we will record all the accounts on the basis of certain rules regarding each accounts, each type of account. So, sir, what is the account? I also covered the account, the meaning of the account in previous chapter, but today I am revising that concept. Account, when we record all the transactions of related to a particular person or a particular item at one place of the period, then it is called account. So according to certain specific rule, we will maintain the account, and we will the recording of all the transaction will be according to this rule. And now, preparation of trial balance. Trial balance is the summary of all account. And trial balance always balanced. If it is not balanced, then there will be some mistake, and we will cover the trial balance deeply in the trial balance chapter. So trial balance is made for only the arithmetical accuracy. Every transaction, every debit has every credit, and every credit has a debit. Then debit and credit both are equal. Always both are equal. So if they match, we know that our arithmetical accuracy of the account is correct. So advantage. What is the advantage of double entry system? Scientific system. Double entry system is scientific system. It is based on certain rule. Personal, the rule of debiting and crediting of personal account, real account and nominal account. तो हर अकाउंट के अपने अपने रूल हैं. तो जिस तरह साइंस के अपने रूल थे, उसी तरीके से आपके अकाउंट के भी रूल हैं. आप लोग अकाउंट का भी डिफिनीशन, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो कुछ भी पढ़े हैं, अकाउंटिंग यही है. डबल एंट्री सिस्टम के ही जरिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं. ओके, नाउ कंप्लीट रिकॉर्ड. In double entry system, we record both the aspect of every transaction. So here we will maintain the complete record in double entry system. Complete record will be maintained in double entry system. Okay. Preparation of
trial balance. It is also covered in above topic. You can say principle and financial position. By the using of trial balance and by using of double entry system, you will be able to know that how much amount will be paid to any other person or creditor, and what is the total sum of our asset, and what is the liability of the business which is paid to the outsider, so that you know that it tells all financial position, what is the capital of the business and what is the liability of the business, what is the assets, sum total of the value of the assets of the business. So all the information comes from double entry system. With the help of double entry system, you prevent from fraud. When we maintain our record by the using double entry system, it prevents all the embezzlement and fraud in the business organization, and it is easily detected by the trial balance, or this is a method. If we will make any fraud, suppose that cash is taken from the cashier from the business. At that time, the balance of cash shows different amount, and the physical verification. In physical verification, we will found that the amount is different, so that we find that all the fraud, and it is double entry system prevent from fraud in this way. Okay, now double entry system is universally accepted, so that it has a legal approval, and it is taken as a evidence in court, so that if we prepare a fairly account, and अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अकाउंट यदि आपने रखा हुआ है, सपोज दैट एनी कस्टमर कम्स एंड says that I am not bound to pay the amount to the business. At that time, business can say that you are bound to pay to the business, because we had already sold some good to you. So legal approval, double entry system has legally approved, and now comparison with the help of, if we make a record of double entry system, and all other business transaction, business firms are also prepare our account, their account in by using this method, so comparability is possible at that time. Disadvantage. What is the disadvantage? First is expensive. It is very expensive, because in double entry system a lot of books are prepared by the businessman, and for the preparation of a lot of books, huge capital is needed, so that this account is preparation, the preparation of all the accounts are not suitable for the small business. अभी आप समझ जाइए कि एक पान की दुकान है, वो डबल एंट्री सिस्टम क्या रखेगा, उसके पास कितना पैसा है कि वो अपना डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करेगा. तो उसके सेल बुक, परचेज बुक, in discussing the process of cycle, accounting cycle, I was said that time we can
record our transaction in original books of account by using journal or by using subsidiary book. And if we use subsidiary book, we have to prepare cash book, purchase book, sale book, purchase return, sales return book, and so that to maintaining all these accounts are so expensive. That's why I am saying that this system is expensive and not suitable for the small business. Difficult. It is very difficult to understand all the concept. And आप लोगों को एक बात बता दें, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो M.Com तक पढ़ जाते हैं और उनको पर्सनल रियल नॉमिनल में एकदम कंफ्यूजन रहती है, आपने वो अंदाजे से बताते हैं, तो ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट। अब एक बार यदि हम कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग में नहीं समझेंगे तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जो भी रूल मैंने अमेरिकन सिस्टम में बताया उसको बार बार आप याद करिए। You have to learn all the concept, neither you will face a lot of problem in the future. So only arithmetical accuracy, double entry system, in double entry system only arithmetical accuracy can be identified. Only arithmetical accuracy, it is not a proof of total accuracy of the books of account. It is not the proof of total accuracy of the books of account. तो भले ही ट्रायल बैलेंस आपकी मैच कर जाती है, लेकिन फिर भी there are some possibility of error. You can't say that our books of account is free from all the errors. It may be some error. तो थोड़ा सा कुछ न कुछ गलती रह सकती है। एक जल्दी में आप लोगों को क्विक रिवीजन इसका करवा दें। डबल एंट्री सिस्टम को 1494 में इटली के वेनिस सिटी में फ्रांसिस्को लूका पैसियोली ने अपनी मैथ की बुक डी कंप्यूटिसेट ऑफ स्क्रैप्चरिस में क्या की, इसने बताया, और फिर उसके बाद ये उसको ह्यू ओल्ड कैसल ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और चूंकि यूरोप में जब वो चला गया तो पूरे यूरोप में फैल गया, उसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। तो ये था डबल एंट्री सिस्टम। सेकंड, ये जो लूका पैसियोली थे वो एक मैथमेटिशियन थे, और डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, भाई दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। हर क्रेडिट का डेबिट होता है और हर डेबिट का क्रेडिट होता है। तो सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, सारे पर्सनल सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिसकी कोई भी मॉनेटरी वैल्यू हो। तो ये सब कुछ हमने बताया कि इसका ये दो अकाउंट को अफेक्ट करता है, बोथ पर्सनल को रिकॉर्ड करते हैं। और क्या हमने बताया कि इसका अकॉर्डिंग टू सर्टेन इसका स्पेसिफिक रूल होता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फिर हम प्रिपेयर करते हैं, एक साइंटिफिक सिस्टम है, रूल पे बना हुआ है, कंप्लीट रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं इसमें, और ट्रायल बैलेंस बनाने में अकाउंटिंग से ही हेल्प मिलती है ट्रायल बैलेंस बनाने में। और फिर उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन हम पता कर सकते हैं, हमको कितना पैसा किससे लेना है, किसको कितना पैसा देना है, मेरा एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना कैपिटल है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं कि इसका फाइनेंशियल ये फ्रॉड से हमको बचाता है, कोई भी फ्रॉड रहेगा इट इज इजीली डिटेक्टेड बाय द डबल एंट्री सिस्टम, एंड लीगल अप्रूवल इट इज अप्रूव्ड एज लीगली, एंड comparison is possible if we use the double entry system. Disadvantage, it is expensive, it is difficult to understand, and only arithmetical accuracy, it state only arithmetical accuracy. Some errors may be in the books of account. Thank you student, your double entry system 7th chapter has been completed. Some other terms the types of the account are remaining only, and I will cover definitely in the next video. Thank you students.